Before we watch this episode today, I would want my subscribers, I will want my new viewers to follow my channel, like my channel, put in your comments how we can do better, and what is the next guest that you would want to see us with. Today's discussion that we spark and ignite is about women empowerment, protection of children, and Dr. Geeta, who is a very special guest, will let us know that how broken families, in fact, not only broken families, but through her NGO, through her hospital, through her profession, how she's given a platform to all those who were in desperate need of revolving around, a problem which was not recognized by anybody else but their NGO, their hospital. And just because, she also holds a very eminent and very important post wherein she is the chairperson, State Commission for Protection of Child Rights. She has also helped so many children bring in a difference in their lives and so many women who still remember her for all her good work. So please watch this channel, watch this episode, and let me know in comments that what you feel is the best. Now I'm putting this episode for you to view and see that how this episode can be fruitful for you. But please do not forget to like, subscribe. Thank you. Today, my focus and tone is to spark a conversation with Dr. Geeta Khanna, talking about her experiences and expertise. Dr. Geeta Khanna is a chairperson, State Commission for Protection of Child Rights, Uttarakhand. She's also a woman and child rights activist. At the same time, she is the one to start with an NGO, Samarpan, Society for Health Research, Training and Communications. Dr. Geeta Khanna runs a hospital in Dehradun. Let's hear her journey, what is and how her experience has helped a lot of children and women gain strength, resilience, and both. Here is Dr. Geeta Khanna. Thank you so much for being on our show today. And she's specially flown down from Dehradun for this podcast. Let's hear some insightful discussions and talk to Dr. Geeta Khanna. Thank you for being there. So I want to, since you have a vast experience in your field and it's a diverse field, you are also handling a hospital. I want to hear stories from you that how have you helped women and children? You've empowered them. You've also rescued them. So if you could narrate a few instances and stories that are still very empowering to hear. So if we start as a doctor, there have been incidences where, I'm a pediatrician, child care specialist. So, women and child is a very integrated life for those initial years, though it's a lifelong bond. But initial years, that well-being of a mother is so intricately connected to what and how the child would fare in its life. So there have been incidences where, we have found this mother helplessly pleading, not verbally, but through her child's health or schooling or other issues wherein we could touch upon what is behind, that disturbed life of a mother. And wherein as a doctor, we could, those times have changed now. But I think at one point of time as a doctor, we had a lot of influence on the family from where they would come in and counseling those mother-in-laws at times, the husband, and, creating some story or situations where we could tell them कि आपके बच्चे का अगर आपको भला चाहिए, इसका बौद्धिक विकास तो इसलिए इसकी माँ को खुश रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दूध पिलाती है तो इसके खान पान पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. Fact also, which is a fact also, but creating a story and scenes around as a doctor, now I'm not so actively into practice. And then I took up schools. Dehradun is so much famous for schools, the residential schools. And I started my journey with the schools with Willem Boys School. And there also, children are very vulnerable, young boys. It's an all boys school. And boys in their childhood were so vulnerable at times, they would feign in complaints because just they wanted, someone to listen to them or they wanted nurture them. And
I could be there with them as a motherly figure at times, finding out what was troubling them. So I think being a doctor, being a lady doctor and a pediatrician gave me a lot of opportunity to influence the lives of children and women through interaction and my sort of communication with their family. Right. We could do that. These were basically the most pressing issues of those time wherein you were interacting with children, you were interacting with adolescent age parents to understand what was the main issue that they were facing while they were growing up. And mothers traveling to be everywhere, working also, taking care of children. I think that was the time when we started that super mom phenomena, wherein the ladies were professionals and they were trying to be a good mother and a wife and a perfect homemaker, trying to deliver their 200%, competing with our friends. I would say we were ourselves also somewhere stuck with that narrative, trying to compete with my not professional relatives, my sisters or bhabis, to say I am not lacking. We were always in that sort of, to some extent, that guilt-ridden. Right. And I would often say, we would come back to work from work. Men had that, those days, men probably had the privilege to come home from work. But for us, it was come back from work to work. Right. But yeah, definitely it's an additional responsibility because at work, you're again taking care of children, their mentality, say, and women were destitute also. And then when you're coming back, you have other challenges at home wherein you have to take care of your family, your children who were growing there. So because that, 35 years ago when we started working, the social scenario was just not so welcoming and not so kind towards working. There were certain notions. पैसा कमाती है तो ऐसा attitude होगा, professional है तो वैसा attitude होगा. So probably to some extent we were fighting out those kind of prejudices also. It all was. So you feel that the way the society is evolving and the standards are changing to look at women or to look at men. And now there's always now and then there are new stories when women say that, we want to move with men shoulder to shoulder. So how much do you support this narrative since you're already in that gamut where, you are empowering women? How would you narrate that story to us? When we started our journey, we also say, yes, equality, equity, is a must, and why should women take it all? But then we were probably fighting it out for our gender, but not for outcomes like we see now, breaking families, fighting for equality. I always say, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को किसी भी सम्मान के लिए लड़ाई करने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए. इकलौता त्योहार जो हम साल में हर त्योहार साल में एक बार आता है, हर पर्व साल में एक बार आता है. एक कन्या पूजन ही तो है जो साल में हम 2 बार करते हैं. और भारतीय संस्कृति में मातृत्व को हर धरती भी पूजनीय है, तो पर जल को, नदी को हम गंगा मानते हैं, धन में हम लक्ष्मी को पूजते हैं. हर तरह से हम पूजनीय थे, परंतु कुछ कालखंड की गलतियां थी जिसमें से and we have seen the peak of those female infanticide और जैसा हम कहते थे कि वो lot of petrol violence, domestic violence, पेट्रोल स्टोव फट जाना है also at some point of time. स्टोव फट जाता था तो उससे बहू को ही क्यों आग लगती थी. तो we thought there was a great need to change and make life safe. There were incidences like Nirbhaya which jolted the whole country. Correct. But we made special laws for them. Right. But unfortunately, over the years, we find that they were rather misused more than used, rather than change the society. So they have been misused, and now the courts have started taking cognizance of this. They were used as a weapon against the boy's family. So you realize that laws cannot break narratives or bring about positive changes in the society. It has to come
from the society through behavior changes. Right. So it has to be our inner calling where we all work collectively. Right. And then we empowered women. We never wanted them to be killed by wives to be killed by them, but not in last 2 months. I think we have 7 incidences where the husbands have been strangled to death, Correct. cut to pieces, put up in cement, Suit glasses and thrown them on the resorts. the cement trunk. I mean, they are horrible. We cannot, because all this would break the institution of marriage. The mistrust that would seep in is seeping in. You know, because of the dowry cases was one. Now the fear of being killed. Correct. It's not that it is in isolation. We still hear those gory stories of men chopping off their wives or putting them, or jilted lovers, living partners, killing girls. Right. We want neither of this. Equity is something that is a right. We need to bring in our भारतीय संस्कृति. You know, एक बार हम उसको अपना लेंगे तो आई थिंक तभी हम इक्विटी इक्वालिटी है. वेस्ट के मॉडल से हम इक्विटी इक्वालिटी नहीं, एक काउंटर टेरर. पहले खाली लड़कियां टेरराइज थी, अब हम मेन को टेरराइज करने में लगे. बट दिस इज नॉट व्हाट वी वांटेड आवर गर्ल्स टू बी एजुकेटेड ऑफ. Yeah. So these are a few things that you have encountered over a passage of time in your arena, in your circle of work. Coming back to the same question when we were discussing about children, you have also started with a helpline. So could you please tell us something about that? That how did you think of, having an immediate helpline like that? So, Samarpan was born out of the idea of preventive and promotive health. And at that point of time, some 25 years ago, I felt there was a complete lack of communication in the health sector. We had no places. Those days, there was not Google Baba available to fetch information. And especially the adolescent, the kishore bacha, जो ना छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में थे वो पड़े. और parents भी थोड़ा confused होते हैं, because we were ill prepared to take up the changing attitude. We ill understood what is going on in that with the neurotransmitters playing havoc and hormones playing their own music to a growing child. So there were so many conflicts that I could see in children as a visiting doctor for so many schools, and then as a pediatrician, children coming to our clinic and parents crying their heart out. So Samarpan was born out of that effort to build health communication as preventive and promotive health sector. Curative to hum the hi. Right. But in India, allopathy was largely limited to curative sector. Right. And हमारा आयुर्वेदा जो प्रिवेंटिव प्रोमोटिव लाइफस्टाइल्स की बात करता है, उसको तो हमने बहुत ही पीछे कहीं कोने में रख दिया था. We were never giving it its due respect and leverage, to handle those health crises that we face now. So out of that, Samarpan was born, and here we tried to build up a helpline for adolescent. At that point of time, it was ASH, Adolescent Reproductive and Sexual Health. Subsequently, we went in for 181, which was the National Women Helpline for Crisis. Then we went on to start the first one-stop center at Haridwar for state of Uttarakhand, and all these were government initiatives where we partnered through our NGO. We also had this mother NGO status technical support agency for adolescent program for 5 to 6 years, wherein then the model was taken up by Government of India after a thorough feedback from all states. The Uttarakhand model was taken up as and renamed as RKSK, the Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram, where we are designing ways and means of communication to reach out to these adolescent boys and girls, talk to them about changing body, the issues which face them, mentally, career challenges, emotional problems, relationship things which have now and evolved, and so much of social media
Now, adolescent parenting was always difficult. But now it is a very big, जिसे कहते हैं ना, sardar. When the parents are as much lost as the children has to have to have. Why do you say that even parents are as much lost as children are trying to find their space in today's society? Like in crime or terrorism, na, we find them that once we are handle this sector, they have evolved another means, social, the cyber crime, financial frauds. Right. Similarly, the parents, by the time they equip themselves to handle with a 10-year-old, he's already now 11 or 12 or in another company, and they cannot map what is going on, what kind of company, especially now. In our times, your times probably, we knew कि मेरे बच्चे का दोस्त कौन है. A teacher knew in school that if Geeta is sitting with Avantika, uski mummy is aware of it. Everyone, all gatekeepers, even the teachers. Right now, how I am connected, with whom I am connected online, the kind of influencers that we have, I call them not role models, but sold models. So how many and what kind of sold models my children are following, we aren't really aware. So parent control is less, you feel? Yes, parent is not aware. It's a nightmare for them to actually know what is going on in their head till something so horrible happens, or till they find out that, oh, my child was sleeping excessively, not just because he was tired, but he was into some kind of addiction. Right. That my child is not interested in talking to me because he is busy listening to that influencer and or building up his own 5,000, 7,000 followers and spending nights on that social media, which is not meant for him. They cannot, as of, we are now a better India materialistically. We have more disposable incomes. We are technologically very, very advanced. Every house has number of mobile phones, iPad, whatnot. Yeah. And the parents at that point of time feel, oh, it is my child's privilege that his household has, or I have the capacity to provide it to my son. Why not? Why should not I drop my girl in the best car? Because it makes her feel good amongst her friends. But what are the consequences? How do we enslave, their minds to this kind of materialism, taking away the opportunity to let them evolve cognitively in a more meaningful manner. वो बौद्धिक विकास का जो और जो शारीरिक एक्टिविटी का जो समय था, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनाने का समय है, वो वाला समय तो आजकल टेक्नोलॉजी खा जा रही है. वो वाला समय तो हम मतलब नानी के घर जाना इज नॉट, आई मीन फॉर अस द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन ड्यूरिंग समर्स वाज कि आज एग्जाम खत्म है और कल ही हमें निकलना है और 2 महीना हमें वहीं रहना है. एंड दैट वाज इट. We have such fond memories, and I think we learned so much. A different household, different kind of environment, different friend circle there. अभी क्या है, नानी के घर भी नहीं जाना है, बुआ के घर भी नहीं जाना है. अब तो हमें कहाँ जाना है, इंटरनेशनल हॉलिडे, यूरोपियन हॉलिडे करना है. अभी तो हमें भारत दर्शन भी नहीं जाना है. तस्दीक को नो दिस इज नॉट कूल, a child will come after. So उसकी रीच अपनी एज के हिसाब से नहीं है. They are not prepared for the kind of exposure that they are getting through this Google Baba and Other social platforms. Yeah. You're very right. In fact, a guest before you who was here on Bharat Charcha had also spoken about this. He was from fashion industry and he said that I am seeing a lot of changes from primitive times. Those were the days when people would still understand the value of being reasonable. Now I feel that women are overdoing empowerment and they have a tendency of roping in everybody if something goes wrong. So you feel that it is also diminishing in a lifespan where, people must understand that respectability
and empowerment should go hand in hand. Absolutely. It cannot be one-sided. If girls talk of equity, at many a times I find, it's not generalization, but many a times you find they want talk of equity, but still they said, oh, we are girls, we need to be pampered like princess. But then they forget that then if you are demanding to be pampered like a princess, your partner would like to be treated and respected like a king. If you want equity, it should be total equity. Balanced. It should be a balance, and then this equity has to come through mutual respect. You don't have to fight. So, as mothers, हमें अपने लड़कों को भी तैयार करने की बहुत जरूरत है. How to handle an empowered girl. अभी वो मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपके टुकड़ों पे पल रही हूँ, ऐसा नहीं है. They are economically independent. They can survive on their own. They can travel on their own. So, boys need to learn. They can't just copy their fathers and grandparents. What is all of that model? even if I think for that period of time, not the ancient, real Bharatiya Sanskriti mein. So I'll come to that, but I'll finish my sentence. And the girls need to know that we can't be equal like this. A joint which is like this, very easily breaks. A joint like this is hard to break. So marriages need to have personalities and traits which are complementary. So we should be talking of gender equality, not gender neutrality. Each one of us has certain specific traits. As a doctor, I can tell you that we are biologically designed different. right. We are, as lady women, we have a very good emotional and hypothalamic center, and they have more technical brains. So it's not, we have all women ISRO projects and crews which recently went to space. As a generalization, girls are, with their soft skills, better equipped. And men were muscular and they were supposed to hunt and provide as providers. Right. So there was a synergy. Might be there's an overlapping now, but all the time you can't be fighting for equality. Wherein, like I said, boys need to learn, the mothers need to teach their boys how to handle empowered women at an equal platform. Whereas mothers also need to tell their daughters and prepare them for marriages. Right. That these are certain responsibilities which are, because only she will get pregnant, only she will deliver a child, only she would be breastfeeding. And, we are biologically designed by God to be the nurturing force of the baby. We only can nurture. Fathers can provide, they can be loving, they can be role models. The nurturing has to come from a mother, and it is throughout all other species. Few exceptions. It is always the chidi which will come Sindhu. Meanwhile, the chida will get, the food and provide. So nature is full of this, and we can't go against nature. Right. And what did you say when I said just as you said that role models cannot be the same. I feel why not? No, you said no, because if we follow the ancient times, if I ask, I just leave this question to our viewers. How many of us know about Ahilya Bai Holkar ji? How many girls or the mothers know about it? You've even heard of it, because we have been brought up. We means the last 100 years also, 70, 75, post-independence also. We have been fed on a very skewed history, where the best of us was hidden, and those time-limited, जिसे कहते विकृतियां जो हमारे समाज में आ गई, लाइक सती, जौहर, ये जो थोड़ी बहुत विकृतियां आई, घूंघट, ये बहुत छोटे कालखंड का है. मेरे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं थे ये. Our women were never in a ghungat. It was only after those attacks and this culture of raping women after a victory over us कि जौहर शुरू हुआ, सती शुरू हुआ. It was not in my culture. अहिल्या बाई होलकर, ना मेरे यहाँ कोई कास्ट सिस्टम था, वही छुआ छाप मेरे. She was
from a very impoverished family, picked up by the king of Indore, that she's a bright girl. You know, चरवागों की बेटी थी, अय्याबाई होलकर. Got married to this prince. Then the mother-in-law and the father-in-law nurtured her to become an able ruler and warrior. Right. Unfortunately, her husband died at a very young age, and in those times also, 300 years ago, we have just celebrated her Trashatabdi Vash. So she also wanted to commit sati, where the father-in-law said that you can only do it over my dead body. If he has gone, you have to take up the reins. And then she ruled with great skill, a very able Shasana. She renovated our mandirs throughout the country. A place called Bauchar in Uttarakhand, you know, is named after one of her acts. क्योंकि वहाँ एक किसान एक गाय को मार रहा था. उन्होंने पूछा क्यों. शी वॉज गोइंग पालकी. उन्होंने रुका कि क्यों मारा. उन्होंने बोला मेरा खेत चर गई है. सो उन्होंने उस पूरे इलाके का पैसा वहाँ के सब किसानों को देके बोला कि अब ये गाय के चरने के लिए आप इसे जितना भी फसल आपका होने वाला था सब एंटिसिपेशन में दे दिया कि दिस इज माई लैंड, नाउ सो इट एंड लीव इट फॉर द काउस. यू नो द ह्यूमन. आप देखिए कि एक गाय के बछड़े की मृत्यु हो गई थी उनके बेटे के रथ के बीच. एंड देन शी आस्क्ड हर डॉटर इन लॉ कि ऐसे में क्या सजा मिलनी चाहिए. एंड शी से जैसे उसने मारा है वैसे उसको मारा जाना चाहिए. एट दैट पॉइंट शी ऑर्डर्ड दैट हर ओन सन बी किल्ड थ्रू अ स्पीडिंग रक. एट विच पॉइंट दे से कि वो जो गाय थी जो हिल नहीं रही थी अपने मंचड़े के पास से, वो आई और उन्होंने रास्ता रोक लिया. एंड देन ऑन द डिमांड ऑफ द वहां के सब पब्लिक उस बच्चे को अबेदा. यू नो इतना न्याय प्रिय, इतनी कुशल प्रशासक, उन्होंने जितने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया. अब ऐसी विमेन एम्पावरमेंट की स्टोरी ना आपने सुनी, ना पढ़ी, ना हमारे को पढ़ाई गई. तो हमारे हिसाब से क्या हुआ कि औरतें यू नो आर meant to be subjected to cruelty. वो क्या पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी. नो इट इज नॉट लाइक दिस. पर वो बताया गया कि वो ताड़न के अधिकारी की जो पशु के साथ में हमने नारी को तुलसीदास ने, the words are different but no one corrected it. इसलिए एक गलत सा नरेटिव बन गया कि भारतवर्ष में औरतों का सम्मान नहीं किया जाना. फिर हमने वो लड़ाई शुरू करी जो फेमिनिज्म की वेस्ट से आई. और किस वेस्ट को हमने रोल मॉडल बनाया? जिस वेस्ट में सिर्फ 100 वर्ष पहले तक वो वोट डालने का अधिकार जानना चाहती थी, जहां पर नारी को यू नो उस पानी से नहाना. इंग्लैंड में बहुत फ्रेश वाटर होता नहीं था, सर्दी बहुत होती थी, ओल्डन टाइम्स हीटर सिस्टम्स नहीं थे, तो वो लोग साल में 1 ही बार 2 बार नहा पाते थे मीटे. तो पहले बड़े नहाते थे, फिर मेन नहाते थे, फिर बच्चे. उसके बाद वो पानी जो शायद नाली के लायक हो जाता था उसी में महिलाओं को नहाने को मिलता था. और अमेरिका में कितने साल हुए हैं जब महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया, जब महिलाओं को. और हमारे यहाँ तो कैसी कैसी दार्शनिक महिलाएं खुली हैं. यू नो आज हम IVF की बात करते हैं, पर कुंती ने तो कि मुझे सूर्य का वरण करना है और सूर्य जैसा पुत्र चाहिए बाय चॉइस. हम तो कुंती पुत्र कहते हैं, हम कहाँ कहते हैं उन्हें पांडु पुत्र. यू नो हम तो कुंती के पुत्र. वी वर नेम्ड आफ्टर आवर मदर्स. हमने मातृत्व को इतना असीम शक्ति और प्रेरणा का स्रोत माना था. लेकिन कुछ समय के लिए हम गलत हुए. पुराना कल्चर और हिस्ट्री हमें पढ़ाई नहीं गई फॉर वट एवर रीजंस. अभी हम उन नरेटिव्स को तोड़ने में कुछ हद तक सक्सेसफुल हो रहे हैं. पर क्या हुआ कि बच्चियों ने सोचा कि यहाँ तो हमें प्रताड़ना ही मिलेगी. वेस्ट का फेमिनिज्म हम लाए झंडे. ये वेस्ट का फेमिनिज्म घर बनाने वाला नहीं है, ये घर तोड़ने वाला है. इन मेनी वर्कशॉप्स आई आस्क यू नो आजकल बच्चे वो भी बोलते हैं कि पुरानी पिक्चरों में वो घूंघट लगा के पैर के छू रही है,
ऐसी ना, मतलब women were shown in a very poor light, they feel. The movies are also based on such things. Society. Even in those days, those days, अगर आप याद करें तो सेठ कमा रहा होता था सारा दिन और वो सेठानी से रोटी पका रही होती थी मेहमानों को और उनको खाना दे रही थी, लेकिन चाबी उसके पास ही होती थी। तो ठीक है, मदर इन लॉ बन के वो घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिला होती थी सारे डिसीजंस वही लेती थी। सो कमाना इज नॉट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। परिवार की कमाई खर्च कहाँ होगी इज द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। टेल मी, जो महिला सुबह 4 बजे उठ के पहले घर की सफाई करती है, खाना बनाती है, फिर किसी विद्यालय में पढ़ाने जाती है, फिर 2 बजे आके पहले खाना खिलाती है, फिर कपड़े धो रही होती है, फिर शाम को ट्यूशन पढ़ा रही होती है। तो क्या, और जब चेक आता है तो वो पति जी डिसाइड करते हैं कि वो कहती है कि मुझे घर बनाना है, वो कहेंगे कि नहीं मुझे पार्टी करनी है। तो आपको लगता है कि ये कमाओ बीवी एम्पावर्ड है इकोनॉमिकली? शी इज डबल टॉर्चर्ड, शी इज डबली एक्सप्लॉइटेड। वेयर पति ने कमाया, तुमने पकाया, बट देन बोथ ऑफ देम सिट डाउन टू डिसाइड, और शी डिसाइड्स कि ये पैसा मेरे बच्चों की पढ़ाई पे खर्च होगा, इसमें घर आएगा, सौंदर्यीकरण करेंगे। शी इज एम्पावर्ड इकोनॉमिकली। So which also reminds me, there was a time when Ekta Kapoor soaps and cereals would sell like hotcakes. So I want you to give us a difference between this era of individualistic families and where those cereals were watched by every family. What do you think? Like, time was better. No, none of that. See, जैसे हमारी ये डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री ने हमारा नुकसान करा, वो घूंघट और सती को ही हमने मान लिया कि यही भारतीय नारी का सेठ था, जो सच नहीं था। दिस वॉज फ्यू से 800-900 ईयर का ही तो कालखंड है। मुगलों का आक्रमण हुआ, फिर अंग्रेज आ गए, बहुत सारे जयचंद हमारे समाज में, लालच आया। कुछ ब्राह्मणवाद की गलतियां थी कि हम कर्म कांड में रादर देन भक्ति, हम कर्म कांड में घुस गए, तो वो भी गलत था। पर क्या आपको लगता है कि एकता कपूर का कुछ भी हमारी संस्कृति से संबंध था? एक ही घर में वो 4 बार शादियां हो कर लेती थी, और ऐसा कुछ समय बना दिया उन्होंने कि हर लड़की षड्यंत्र के कारण ही शादी कर रही होती थी, कि एवरीवन हैड एन एजेंडा। या तो सास का एजेंडा बहू की तरफ है, या जेठानी का दरानी की तरफ है। But thank God we came out of that. Yeah, now and because that was the only thing available. तो ऐसे ही वो फिल्में थी जहाँ हर लड़की को अबला, अरे वो प्रेग्नेंट हो गई, अब वो समाज के दरबार तिरस्कार हो गया। एक बहुत गलत तरह के नैरेटिव्स तो मीडिया ने ओवर अ पीरियड, तभी तो हम वहां पहुंचे जहां हमें नहीं पहुंचना चाहिए था। वो सोने की चिड़िया हमारी खाली लूट से नहीं डिमिनिश हुई, हमारी जो कल्चरल हानि करी हमें, जो सबसे बड़ा नुकसान पिछली कुछ सरकारों ने करा है, वो हमारे बच्चों से, उनके मन से, उनकी बौद्धिक से भारतीयता का गर्व मिटाने का करा। We started looking down rather than look up. Wow, what a great civilization. Right. रोमन्स चले गए, ग्रीक चले गए, हम तो कितने भी आक्रमण हुए, कितनी भी गुलामियां, हम रहे, हमारी संस्कृति रही। आज हम अपनी उस सॉफ्ट पावर्स को, वर्ड को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आज हम बता रहे हैं कि देखिए गंगा और क्या होता है, how you manage 5 crore people in a day through a gunstone. How many administrators of a very, very powerful, developed country can do this kind of crowd management? That's true. कहाँ महिला को कभी लक्ष्मी के रूप में, कभी सरस्वती के रूप में, कभी देवी के रूप में, और कभी कंप्लीट पावर, देवता हार गए, शिव जी के पास गए, कुछ नहीं हुआ। बाद में किसकी, विष्णु जी ने कहा कि जाओ भाई देवी की स्तुति करो। तो वी हैव ऑलवेज बीन अ कल्चर वेयर women power and we don't need to compete with men. We have always been better than men. We need to take them along. We need to walk along, build synergism rather than slug out
I feel that women, they need this assurance that their work has to be recognized instead of hanging this flag of empowerment in every scenario or feminism in every scenario. That's my personal perception, which I feel. So the reason for breaking homes these days is this only, that people must understand that everything has to move at par, like parallelly. But you can't just think about your family, my family, No. or thing, my thing. That narrative has to शादी go out. शायद सोच समझ के करिए. चलिए बिना देखे शादी हो जाती थी. अब पढ़े लिखे हैं हम सब, अपने अपने परिवेश में कुछ अपना अपना अलग बौद्धिक लेके आते हैं. एक दूसरे को जानना समझना जरूरी है. वो टाइम बट एक बार हो गया तो देखिए, एज कमीशन I am surprised with the increase I see now in those parents who come to me fighting it out. वो कहता है कि ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो कहती है ये मुझे मारता है, ये मेरे काम की कदर नहीं. एंड who is suffering? लो दोनों तो कर ही रहे हैं, पर सबसे ज्यादा दया के पात्र कौन है? सफर कौन कर रहा है? इस ब्रोकन फैमिली से बच्चे. हमारे पास तो चाई कमीशन में वो बच्चों के लिए तो आते हैं कि उनके अधिकारों के लिए. And I tell both of them कि किसके लिए लड़ रहे हो? So called, एक कहते हैं मेरे को रखना है, दूसरा कहती है मुझे रखना है. तो तुम दिखा रहे हो कि मुझे बड़ा प्रेम है, इसलिए मेरा बच्चा मेरे पास होना चाहिए. बट अपने अहंकार के खातिर आप उनका बचपन में खुशियां शुरू से ही बांट देना चाहते हो. You're slugging it out at the cost of your child's well-being and happiness. तो ये जो लड़ाई है ना बराबरी की, नहीं, मैंने कहा ना, हमें लड़कों को तैयार करना है कि वो एम्पावर्ड लड़की को समझ सके, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें. बट लड़कियों को भी समझना है, they have to play an important role equally. मातृत्व है हमारे पास जो है, हमें कहीं compete करने की जरूरत. We need to be very proud of ourselves. We need to have full faith in us. And the society is all yours these days. Laws are by your side. So, मैं तो देखती हूँ कि after 2014, the kind of, platforms that are open, which have opened up for women, the kind of support structure we have for women. Very well, no doubt. Yes. Yeah. So, we don't need to bring development and empowerment at the cost of peace and happiness. Ultimately, खुश, मुझे कोई भी लड़की वो जो डिवोर्स के लिए फाइट करे वो भी कोई खुश नहीं है. Similarly, in the West has experimented with this conflicting ideology of personal me, myself, my thought, my wish. I mean, we are trying to come back. एक और बात अच्छा शब्द, एक दिन मेरे अभी एक दोस्त ने अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेके आया. He said she's only 22 and I was very surprised. I said, वाह, 22 साल में आजकल तो कोई कर नहीं रहा बच्चा 30 साल से पहले. इसे हाँ, मेरी बेटी भी नहीं करना चाहती थी, हम 1-2 साल से समझा रहे थे. अभी उसको 40 लाख का एक पैकेज मिल गया था एंड शी वाज रिक्वेस्टिंग कि 2 साल मुझे नौकरी करने दो. बट आई सेड, बेटा 40 लाख रुपए साल की नौकरी के पास 2 साल में जो तेरा कॉर्पोरेटाइजेशन होगा ना, फिर पता नहीं मैं शादी कर पाऊंगा तेरी, या तेरी शादी कितनी सतह. सो अभी तुम शादी करो एंड यू हैव ऑल द टाइम अहेड. आजकल का माहौल इतना अच्छा है, मैंने उसको बहुत फेथ था जिस घर में, परिवार में यू हैव ऑल द फ्रीडम. उसके बाद तुम जो करना चाहोगी कर. अब ये तो पर्सनल इशू हो गया, बट दैट वर्ड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ लाइफ जो हो रहा है ना, उसमें है वो मी, माई सेल्फ, माई टाइम, माई चॉइस, माई विश. नो, इट हैज टू बी वी. तभी बच्चे टुगेदर, वी अस. बच्चे तो तभी खुश रह पाएंगे, सोसाइटी तो तभी फ्लरिश करेगी, नर्चरिंग केयर तो तभी मिलेगा, मेरे बच्चों का भविष्य तो तभी सिक्योर होगा जब ये मुट्ठियां तन के नहीं, माँ बाप क्रेडल बन के अपने बच्चे को पाएंगे. Very, very rightly put, Dr. Geeta. Also, I want to know this, that how long does it take for a child to understand from a broken family, and for a mother also, and plus father, that it's taking a toll on your child's mental health. It's taking a toll. Child never comes to know. And yes, child doesn't know. It's just that they start internalizing this. Some of them will go into depression and become very timid.
कि मैं किसी को नहीं ऊंचा बोलूंगी। जैसे उन्होंने देखा कि हर बार मम्मी पापा लड़ते हैं, वो चिल्लाते हैं या गाली, तो एक ही कि कुछ भी हो जाए वो अहिंसा की पुजारी बन जाएगी कि मुझे कोई कितना भी कुछ कहे मैं तो कुछ नहीं कहूंगी, एंड वो बोलेगी ही नहीं। चिल्लाना तो दूर, उसे बोलने में भी डर लगने लगेगा। एक तरफ ये है वेगी, मतलब दे स्टार्ट इमिटेटिंग, तो वो नॉर्मल बात भी करेगी, वो हर बात में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी, बच्ची या बच्चा, यू नो whosoever। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल आउटकम्स। प्लस पहले के वो जो संयुक्त परिवार थे हमारे, माँ बाप की लड़ाई हुई तो दादा दादी ने संभाल लिया, दादी बीमार हुई तो माँ ने घर देख लिया, यू नो कहीं बाहर जाना है या नानी के घर गए तो वहां भी एक ग्रुप ऑफ मामा मामीज मौसी। तो बच्चों में एक सामंजस्य बिठाने की जो आदत थी, जो एक कंफर्ट जोन की डेफिनेशन बहुत अलग थी। इट वाज वेरी इंक्लूसिव। अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, अब मम्मी पापा की लड़ाई हुई तो बच्चा कहाँ जाए? So this is a disadvantage. तो फिर वो या तो किसी ड्रग बेडलर और आइडेंटिफाई कर लेता है, कहीं ना कहीं बच्चा कोने में बैठे रो रहा है वो, या कहीं आइसोलेटेड स्पॉट पे, यू नो मान लीजिए फ्लैट में रहते वो छत पे जाके कोने में बैठ जाएगा। यू सी इट इन मूवीज, एट टाइम्स इट इज करेक्टली पोर्ट्रे, यू हैव अ फेवरेट प्लेस वेयर यू वेंट आउट, एट टाइम्स वीप आउट, एट टाइम्स जस्ट साइलेंटली you know talk to yourself कि मेरे साथ क्या हो रहा है। and there are so many sharks who will identify you, they can exploit you physically, sexually, through drugs, you know। आप फिर क्या होता है, बहुत दुखी हैं, आपके हाथ में आपने फेसबुक पे अपना दिल उड़ेल दिया। अब कहीं कोई अंकल बैठे हैं जो हैं तो 42 साल के पर पोज कर रहे हैं, 12 ही साल के, 15 ही साल के आपके दोस्त बन के आ जाते हैं। आप भी दुखी हैं, उस बच्चे में किसके कंधे पे रख के सर अपना दुख उड़ेला, हमें नहीं पता चलता, उसको भी नहीं पता चलता। और कल को फिर वो बच्चा यू नो किन हाथों में जाएगा? घरों में काउंसलर खत्म हो गए ना, अब हमें प्रोफेशनल काउंसलर्स बनाने में शर्म आती है। अभी भी हम उतने भी इवॉल्व भी हुए। अगर हम आप किसी को कहते हैं, पेरेंटफुली कहते हैं कि आप काउंसलिंग के लिए जाइए या आपके बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है, इवन द स्कूल्स डोंट अंडरस्टैंड दैट नीड। वो कहेंगे क्यों, कोई पागल है? और घर में जो होता था, अब चाचा की मम्मी से नहीं कहना है, पापा से नहीं कहना है, तो चाचा से कहना है, मौसी से कह देना है, बुआ ने समझ लेना है, दादी ने यू नो इतना समाज देख लिया है, अपने कई सारे बच्चे पाल लिए हैं, तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ये तो गुमसुम रह रहा है या इसने खाने में हैबिट्स में बदलाव आ रहा है। अब वो सब जो नर्चरिंग एनवायरनमेंट इकोसिस्टम था, वो इस इंडिविजुअलिस्टिक लाइफस्टाइल से बिखर गया है। अभी हमारे यहाँ बन रहे हैं CWCs हैं, कमीशंस हैं, हमारे बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, बट स्टिल वी हैव नॉट कम टू दैट काइंड ऑफ सोशल जो जिसे कहना चाहिए मॉनिटरिंग सिस्टम लाइक वेस्ट की, यू नो हर थोड़ी देर बाद वो आ रहा है, फॉर्म भर रहा है, राइट। अभी तो क्या होता है कि जो हमारा अपना एक और बहुत मेरा फेवरेट है अपनी वर्कशॉप्स में कि अभी हम कितना CCTV कैमरा से क्राइम अनफोल्ड कर रहे हैं, फिर भी क्राइम तो बढ़ रहा है। हम बाद में कल्प्रिट पकड़ लेते हैं, बट प्रिवेंशन तो नहीं कर पाते CCTV कैमरा से। बट पहले जमाने में ना तो कोई CCTV था, फिर भी हर बच्चे पे नजर थी, और वो थी हमारी पड़ोस की आंटी। जैसे ही मम्मी पापा दोनों जाते थे, पड़ोस की आंटी herself would take up, or uncle would herself or himself take up the charge of a चौकीदार। बट नाउ ये आते घर में कौन आया था, आप जब चली गई थी तो ये एक लड़का है आपके जाते ही आता है। और हम भी कोई याद है बचपन में वी वुड नॉर्मली क्रिब ना कि ये कौन होती हैं, बट आवर मदर्स और फादर्स उसे क्यों नहीं होती हैं? But you know, doctor, I feel that these neighborhood only now in today's scenario, when we read newspapers or when we are watching news, these uncles, aunties, or maybe caregivers, supporters, have only turned into, you know, गासली मॉन्स्टर्स एट टाइम्स। right. बट क्या है, जो नहीं भी है ना मॉन्स्टर, जो वेल मीनिंग आंटी भी है, उसने अगर कहा कि तुम्हारा बच्चा ये कर रहा था, तो प्रोबेबली द आंसर बाय द फादर, तुम्हें क्या? अब
जब माँ बाप ने कहना शुरू करा तुम्हें क्या, तो पड़ोसियों ने कहना क्या हमें क्या। अब क्या होगा ना, तुम्हें कुछ ना मुझे कुछ, a child is on their own. We thought this was so good. We do now. एक वो व्हाट्सएप पे आजकल जो घूम रहा है ना कि जेंटलमैन ने बोला कि यू शुड नॉट बी डूइंग दिस, इट कैन डैमेज योर हेल्थ। तो उसने आंसर बैक करा कि यू नो माय दादी lived up to be 96 years old. He says, wow. She said, and she never advised anyone. She just minded her own business. So this is a rebuke towards seniors advice, uncle auntie की किसी भी सजेशन। तो ये बड़ा पॉपुलर सा जोक है आजकल व्हाट्सएप पे घूम रहा है, पर ये जीवन की सच्चाई भी है। माइंड योर ओन बिजनेस का एटीट्यूड। टीचर ने डांटा तो पेरेंट कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो टीचर कहता है मुझे क्या। अभी हमारी भी कमीशन विशन और ये चाइल्ड प्रोटेक्शन में हमने फिजिकल मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते। We copied certain models from the way. You support that you should not hit the child. No, hitting is not an option at all. But what if somebody is stubborn? Like children can do it. This is what, see, officially we are like counseling करो, but counseling मेरी क्या हो रहा है, hit नहीं कर रहे हैं। अब इतना तो हमें आ गया क्योंकि legally hitting is dangerous, can put you in trouble, इसलिए आप hit नहीं कर रहे हो। बट अगर हिट नहीं कर रहे हो तो जो उसका मैकेनिज्म आपको उसके अलावा फॉलो करना था, मैकेनिज्म एज इन कि ये बच्चा इतना गलत जवाब दे रहा था क्यों। एंड दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल दैट आई एम टॉकिंग, इट इज जस्ट दिस 15 days ago I had a case where in a very good school, charitable school, which I was, when I went for the first time to that school, I was very impressed. They were doing a yeoman job for underprivileged children. Now here a complaint came कि टीचर ने उसे बहुत मारा और फिर जो है वो सीसीटीवी में पुलिस ने मुझे कंफर्म भी कर दिया कि टीचर ने वाकई में। अब जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि हमने साहब उस टीचर की सीसीटीवी में जैसे ही देखा हमने टीचर को टर्मिनेट कर दिया एंड दे थॉट दे हैव डन देयर जॉब। बट जब मैंने उसको प्रूव करा कि वो क्यों मारा था, कि वो बच्चा गाली निकालता था, बहुत गाली निकालता था, उसने टीचर को बहुत बुरा भला कहा, द टीचर गॉट प्रोवोक्ड, उसने हिट कर दिया। आई कैन अंडरस्टैंड, यू कैन गेट प्रोवोक्ड एट टाइम्स, बट वाज सैड हियर वाज द फैक्ट दैट नो वन ट्राइड टू फाइंड आउट कि बच्चा ये गाली गलौज क्यों करता है। नो वन कॉल्ड द पेरेंट्स, नो वन स्टडीड द फैमिली हिस्ट्री। नाउ इट वाज that the father was alcoholic, there was continuous shouting and quarreling at home, and वो बहुत गाली निकालता था, वहां से बच्चे ने सीखा था। And mother was a very timid lady. She would come and tell the teachers कि आप ही सुधार दो, because she herself had no power in the house. Right. So instead of looking at the causes, working on it, बस चाटा नहीं भरना है, वो चाटा नहीं मारना है, नहीं, और तुमने मारा तो तुम स्कूल से निकल जाओ। Neither did they try to do some anger management for this teacher, nor did they try to go into the history as to why the child was behaving in this particular manner. तो मैंने कहा ना, हमने लॉ तो बना दिया चांटा ना मारो, बट जहां से हमने ये लॉज उठाए हैं, इस तरह की प्रोटेक्शन के रूल्स उठाए हैं, वहां पर फिर एक अलग तरह का मैकेनिज्म इन प्लेस करना बहुत जरूरी था। It is important to follow a pattern also, right? Why, what the child is going through, once his family history, why he's come to this, way of dealing with other children and talk. हाँ, जो गाली गलौज निकलता है, कल वो चाकू चलाएगा, या शादी होगी तो वो अपनी वाइफ के साथ अगर ऐसे बिहेव करेगा तो might be they'll get violent. That's true. Now that you have very well put that relationship between husband-wife, children from broken homes, and also adolescent age. We'll little bit speak about school admissions which are denied to differently able children. How is your NGO contributing towards helping that? I would start with the incidents from my state commission. One day I get a call from a friend that I'm referring this lady and she would like to speak to you. So she says she was really disturbed, crying. I said, come to my office. She said, abhi to main Bangalore mein hu, thode din. She came to my office with a wheelchair bound daughter, smart girl. She was suffering from a congenital spinal disorder wherein she went through multiple surgeries, had to miss school
a lot of times. Mm. And the schools kept on, denying her promotions because of the lack of attendance. In the process, she lost the power of her legs and she was wheelchair bound. But the parents were so determined and so good. They did not have another child and they trained her in para athlete. She won in an international event. She won a gold medal for my country. After this, the parents and the nani and all grandparents are originally from Dehradun. They were living in Gurgaon all along to facilitate her trainings and her therapies. So, after a certain period, this girl is now 12, 13 years at that point, they decided to come back to Dehradun. Mm. And for this, they wanted, and we all talk of inclusive education, we talk of inclusive everything for the specially abled. They went to the most prestigious school where, unfortunately, the grandparents had been a teacher, which church they still visit every Sunday. They refused. They went to another so-called prestigious, and they went to 4 such so-called prestigious schools. Mm. Each one of them denied admission to the child on one pretext or the other. Seat nahi hai, ye nahi ho. Despite the gold medal that she That she had. Wow. Now, these parents were so disappointed, and when they spoke to me, they had already gone to Bangalore. So when they met me as State Commission, we are also the appellate authority under the Right to Education Act. So I summoned all the 4 schools, and they had this various. And of course, I did not take it kindly. We said, do will, and they all got ready. And you have to have an infrastructure if you have 3,000 children. You have to have an infrastructure, you have to admit. But the parents said that by now, we've already taken admission in Bangalore. And look at the sensitivity of that Bangalore school. Right. They said they did not have a lift. So the parents said that you can shift her classroom to the ground floor. They said, no. The classroom will not be shifted. During the summer holidays, we'll have a lift installed in the school. I was so impressed, and I would give this example wherever I would go. 3 months down the line, I get another call from the parents. And this time they said, ma'am, आपका counterpart कर्नाटका का कौन है? I was surprised कि इतने अच्छे स्कूल में गई है जो इतना अंडरस्टैंड स्कूल था. अभी क्या हुआ कि बच्चे इतना ट्रैवल कर रहे हैं that now she doesn't want to go to school. Khair, the State Commission there intervened and took up group counseling for the children in that school. But by the time they were so traumatized, now the child is on home learning. Then decide. अब यहाँ पे सिर्फ स्कूलों की बात नहीं है. ये सिर्फ स्कूलों की बात नहीं हो रही है. यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अपने बच्चों को भी इंक्लूसिविटी सिखाना भूल रहे हैं. वो बच्चे जो उसके साथी, जो उसको सपोर्ट, उसका संबल होने चाहिए थे, उन्होंने उसका इतना मजाक बनाया, उसको इतना मेंटल टॉर्चर दिया. तो हम एज अ सोसाइटी ना तो खुद तैयार हैं, ना एज एडमिनिस्ट्रेटर्स हम में वो सेंसिटिविटी है, ना हम आगे की जनरेशंस में वो सेंसिटिविटी पाएंगे. So basically, the acceptance power is just diminishing everywhere, all kinds of involvement. जबकि डिसेबिलिटी में सबसे बड़ा फैक्टर है इंक्लूसिविटी. चाहे वो कास्ट की एक्सक्लूसिविटी हो, चाहे वो डिसेबिलिटी की वजह से एक्सक्लूसिविटी हो, चाहे वो मेंटल सब नॉर्मेलिटी की बात हो. हमें बात करनी है एक अच्छा स्वस्थ समाज है, इंक्लूसिव समाज. चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कल रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने का हो. तो फर्क इतना ही रह गया कि तब जब अंग्रेज से तो वो लिखते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, एंड नाउ दैट वी आर इंडिया, वी आर भारत, हमारे अपने हाथ में हमारा शासन प्रशासन, हमारी बागडोर है. तो हमने उसमें तरह तरह के एक्सक्लूसिविटी ढूंढ लिया. कलर बदल गया है उसका, शायद रूप बदल गया है एक्सक्लूसिविटी का, पर हम इंक्लूसिव सोसाइटी तो नहीं बन पाए. और ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत दुख की बात है. Okay, so coming back to the question, I want to know that since there are policies also, there are reforms, there are laws, everything which are there to protect a child and women's right in the country. I want to hear from you that how that is coming in play and practice to help them. देखिए, we have made 3 laws, special laws in our country. पहला था शेड्यूल्ड कास्ट की प्रोटेक्शन के लिए, फिर आया विमेन के लिए
दैट एंटी डाउरी। फिर आया पॉक्सो, यूज भी बहुत हुआ, मिस यूज भी हुआ। वी ऑल नो अबाउट इट, वी नॉट गोइंग टू द डिटेल्स। व्हेन वी टॉक ऑफ पॉक्सो, इट इज अ जेंडर न्यूट्रल, ब्यूटिफुली डिजाइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि अगर माइनर को किसी भी तरह से असॉल्ट करोगे तो आप बख्शे नहीं जाओगे, ये स्पेशल तरीके से, बिकॉज माइनर का असॉल्ट एक अलग मायने रखता, एंड इट वाज जेंडर न्यूट्रल, यू नो, लड़की लड़के दोनों के लिए वो बराबर से एप्लीकेबल था। बट आज जब चेंजिंग सिनेरियो है तो हम क्या पा रहे हैं कि कंसेंसुअल रिलेशनशिप है, बाद में जब पकड़े जाते हैं तो होते तो इमेच्योर ही हैं, बच्चे हैं, तो एक जना कह देता है कि साहब आई वॉज बी एक्सप्लॉइटेड, और दूसरे पे पॉक्सो लग जाता। तो नहीं, सो लॉज बना के वी स्टार्टेड आई थिंक टॉकिंग अबाउट लॉज। व्हेन लॉज से सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाना मुश्किल है, डर बिठाने के लिए इनिशियली दे कैन प्ले अ रोल, बट बाय द टाइम आई थिंक वो जब थोड़ा सा सीप इन करते हैं तो हम उसका डिस्टॉर्शन और उसकी मिसयूज को इतना सीख जाते हैं कि आई थिंक देन दे लूज रेलेवेंस एंड दे स्टार्ट बीइंग मिसयूज्ड। मैं अगर अपनी कमीशन की और एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो पॉक्सो मेरे लिए सबसे, जे एक्ट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। अब क्या हो रहा है कि ग्रूसम क्राइम है, हमें दिख क्या है कि साइकोलॉजिकली उसका वर्कआउट भी कर लिया कि वो बदलने वाला नहीं है, बट क्योंकि वो 17.5 साल का है, अभी पुणे वाले रोड रेज में आपने देखा, तो हम उसको कहते हैं कि नहीं साहब ये तो बच्चा है, वो नहीं है बच्चा, अगर आपने लैंड करके उसने और क्राइम को करा है। या निर्भया के केस में यू रिमेम्बर, एक उनमें से माइनर, It was heart wrenching. इट वाज, The nation talks about it. I mean, we don't want to think about तो it. कहने का ये है कि स्पेशल लॉज की जरूरत पड़ती है, बट आई फील वो लॉज उस कालखंड के लिए होने चाहिए, कुछ समय के लिए होने चाहिए, अवेयरनेस के लिए। बाकी तो द चेंज वुड ओनली कम फ्रॉम विद इन अस, And the mentality that people are brewing in. वी आर ग्रोइंग इन। हम अपने बच्चों को ही तैयार करें उस सेंसिटिविटी और इंक्लूसिविटी के साथ कि ना तो लड़का लड़की की लड़ाई हमें लड़नी पड़े, ये जेंडर की फाइट ना करनी पड़े, परिवार टूटने से बचे रहें। और आई थिंक उसके लिए हमारे पास वन स्टॉप सोल्यूशन है, एंड दैट इज भारतीय संस्कृति। हम अपनी पुरानी अध्यात्म को जाने, यू नो, बैठ के छन्नी वो ना बजाएं, हम बहुत सारी कथाओं में जाके ना ही व्याख्यान सुने, बट अगर हम अपने वेद ज्ञान को आत्मसात कर लेंगे तो हम चाहे जानेंगे कि भारत में देयर वाज अ, वो अक्ष किन्नर, यू नो, वी हैड अ प्लेस। हमारे यहाँ शादी का निमंत्रण नाई लेके जाता था, शादी में ये काम मामा करेगा, ये मौसी, मतलब इन एवरी रिचुअल वी हैड एवरी kind of a person, with every kind of a job. They all played their own role. They played their, and a very important role. Correct. No one was treated inhumanly or subhumanly. जो मेरा अपना भारतीय संस्कृति, not the distorted history that we of last few 100 years and the distorted history that we have learned. Right. हम अपने भारतीय ज्ञान और अपनी परंपराओं को अगर फिर से एक बार आत्मसात कर ले, अपने बच्चों को में वो आत्मविश्वास दें कि हम किसी से कम नहीं, पर ये भी हमसे कम नहीं, यू नो, सब आदरणीय है। तो आई थिंक हम फिर से वो विश्व गुरु की जो परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसके लिए, और मातृशक्ति से तो मेरा नम्र इस पॉडकास्ट के थ्रू निवेदन रहेगा कि इस नव निर्माण में सबसे अहम, नॉट जस्ट एज एंटरप्रेन्योर, नॉट जस्ट एज इकोनॉमिकल पावर, नॉट जस्ट एज अ डॉक्टर और अ लॉयर और अ एक्टिविस्ट, एज अ मदर, you are the ones who are going to change this country. You are the one who is going to build this Viksit Bharat. Right. You know, the architects of Viksit Bharat, as a TMOD says. We are the ones who are going to bring back that sensitivity, empathy, and compassion that belongs to us. That's not foreign for us. So it's the module of I should be eradicated, and we as a society should work towards the problem cumulatively.
so that there are less problems. Laws are there, reforms are there, policies are there. But we should know that more than misusing them, we should make a use of it in an appropriate manner. Absolutely. Very fantastically put. And why I say this today, that this episode is special because we have spoken about children's right. We have also spoken about how we can empower women, but at the same time, not forgetting that men also have to have their role in evolving this whole scenario when you're moving in a family. So I'm sure you'll hear Dr. Geeta and her episode, and you will know the narrative that how we have to move as a family together. But I'm keen on knowing that you have very well played all the roles so far. So how is this journey, and how do you feel elevated and moving in this path now, and maybe in times to come in a different and a more proactive routes? Okay. So while you were traversing this journey, you don't know yourself. Right. It's only now that you can reflect back and think of the strengths. Okay, that kind of thought process helped me sail through this. Oh, that was part of my inclusive nature. I mean, it's only now. So I would say little patience, hard work, perseverance. So that's tolerance एक बहुत बड़ा factor रहा है. I think when people see you sitting on a plush post, you know, wearing a good clothes, having a comfortable life, you know, क्या बात है. You know, most of us, I mean, we also thought about others, like at what point of that we would, you know. हमें लगता था वो अलग ही होते हैं या वो अलग ही जगह पैदा होते हैं, या इंदिरा गांधी तो मतलब चूंकि नेहरू की थी, बट हम थोड़ी ना वो सोच सकते हैं. बट यू नो हम आ गए कहीं अपने एरिया में, अपनी फील्ड में आप एक मुकाम तक पहुंचे. उसकी जर्नी के खट्टे मीठे इंसिडेंसेस हैं, बहुतों का साथ है, और जिन्होंने टांग खींची उनका भी बहुत बड़ा एहसान है. बिकॉज उन्होंने आपके अंदर का वो फाइटर जागृत करा, उन्होंने आपके अंदर वो भिड़ने की कि मुझे तो करके दिखाना है. दोज हु वॉक्ड यू, उनको आंसर बैक करने के लिए, उनको गलत प्रूव करने की कोशिश में शायद आपने वो एफर्ट डाल दिया जो नॉर्मल कंफर्ट जोन में हम नहीं डालते. लाइक आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद माय चिल्ड्रन, गाना उनके साथ, खाना पकाना, घर में मेहमान. I came from a Punjabi family, कपड़े, मम्मियाँ, at good times, good food, and everyone having a luxuries of little luxuries, but mothers only in that kind of role. आज क्या खाना बनाना है, कल कहाँ जाना है, and but उस दौरान में भी हमें वो मौका मिला. I went to the most prestigious college, KGMC. I was the first person to go to a hostel from my, in my age group, there is no other working women, but we were given opportunities. So thanks to our parents' progressive thinking. At the same time telling us कि भाई रहना तो इसी समाज में है, रहना तो इसी कवर में है. तो वो एक बहुत ही I think fruitful nurturing थी. और मैं तो अक्सर कहती हूँ कि हमारी ये जो पढ़ी लिखी माओं की जो पहली जनरेशन थी, उससे हमारी थोड़ी अनपढ़ माएँ और काफी अनपढ़ हमारी दादियाँ were better mothers, were more inclusive in their care. They had more time, because there is nothing like quality time. Children need quantity time. You definitely, doctor, sound like these things were not really imposed on you, and now today generation, if you talk about anything relating women, children, men, they always make it sound so big, as if things are getting imposed. Even if you tell them that the little work which you have to do, which used to be maybe part of your daily routine, that feels as if somebody is imposing that. Oh, I think that is a privilege. Yeah, the privilege of serving. I mean, अभी नहीं खाना बनाने का समय तो नहीं मिलता शायद, बट आई एम श्योर, यस ऑफ कोर्स. बट अभी नहीं भी गए तो हम टेबल पे अगर परिवार के साथ है तो हम परोस देते हैं और हमें वही आनंद की अनुभूति होती है. आई मीन वी डोंट फील दैट हमें मेनी टाइम जैसे कि आपके जूनियर है कोई, आप ये क्या शिव हो जाते हैं सबकी करके.
So I feel ये तो हमारे को as women we have this privilege कि हम पका भी सकते हैं, हम कमा भी सकते हैं, हम खिला भी सकते हैं और हम खिलाने का पूरा एक जिसे कहना चाहिए अगर बहुत बड़ा मंच तैयार करना है तो हम वो भी कर सकते हैं. तो I take it personally as a privilege. I think it's ingrained in this country only. Why? Because we are a country where we are also known for service, hospitality. So every individual or a citizen, I think, should take it as a responsibility, and the mindset should not feel as if you're imposing. You go outside, if you're not reaching a 5-star hotel, you're still carrying your luggage. So when you are happy doing it over there should not be any problem doing it at home. Yeah, because they belong to a country like, that गाना when I still because हमारे शायद और कवियों के गानों में तो हमेशा से एक फॉलिंग आर्मी को भी एक अच्छा गीत जिता देता था. सो आई फील काइंड ऑफ सॉन्ग्स वी लर्न इन स्कूल्स. सबको खिला के खाती है माँ जहां. सो दोज काइंड ऑफ सॉन्ग्स दे आर इनग्रीडिएंट इन आवर साइकी. मेरा देश महान, नॉट बिकॉज मेरे को झंडा लेके चलना है, नॉट बिकॉज मुझे स्लग आउट करना है, जस्ट बिकॉज आई नीड टू बी एट माई बेस्ट. जो पोटेंशियल प्रभु ने दिया है वो अगर हमें अचीव कर लिया तो वी आर सक्सेसफुल. नॉट एवरीवन हैज टू बी एवरीवेयर. right. हम सबको मोदी जी नहीं बनना है, हम सबको इंटरनेशनली एक्लेम नहीं होना है, हम सब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन सकते या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, पर हम अपने परिवार के लीडर रहे, हम अपने कम्युनिटी आसपास के लोगों के लिए अनुकरणीय हों. और जो प्रभु ने हमें जितना भी पोटेंशियल दिया है उसके अनुरूप हम परफॉर्म कर सकें. एवरीवन इज डिफरेंट एंड आई थिंक आई लीव विद द थॉट दैट एवरी चाइल्ड इज अ स्पेशल चाइल्ड. तो उसको जो है हर किसी को लिटिल इंडिया चैंप नहीं बनना है, हर किसी को 99.9% पे नहीं लाना है. Each child is a gifted child. Each child has its own ability. So enjoy that. Love your children unconditionally. Not कि तू पास होगा तो मैं प्यार करूंगी, मैं तुझसे प्यार करूंगी, तू पास होगा तो मैं बहुत खुश होंगी. Is okay. And also that lines wherein this I don't remember the movie but सुशांत राजपूत tells ना जब उसका बेटा सुसाइड करके कोमा में पड़ा है कि ओ गॉड हमने तो जीतने की तो बहुत सारी प्लानिंग करी थी, शैंपेन खोलेंगे, हॉलिडे पे जाएंगे, तेरे लिए ऐसी वाला सूटकेस खरीदेंगे जब तुझे छोड़ने जाएंगे, और कभी हमने हारने की तैयारी ही नहीं. सो प्रिपेयर योर चिल्ड्रन फॉर अप्स एंड डाउन्स, फॉर द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ. Act. It's not always the victories that should always be part of the game. Yeah. So learning from our losses and moving on is the mantra of life. You have wonderfully given us an eye-opener. You've also spoken about things which, are acting like a reminder now through this episode in people and children and, women especially when they watch this episode. There's something before we wrap up, I would want to know about, you must have come across some rape victims, children who were sexually abused. So there may have been, calls and complaints. Have you ever gone surprisingly and helped children from a scenario like that? Many a times. We would not go into that details because I think the circumstantial learnings from there have already been talked about. True. But it is something that is so beastly and so boring. I mean, we really, really need to get out of this. ऐसा लगता है कि जैसे हॉबीज ही बना दिए लोगों ने. मतलब what? And the saddest is that so many times now we are getting, when you go to those JJ children, I mean their biological real sister, biological daughters are being raped. Oh, that's not what my country is supposed to be. That's not acceptable. So does it even take a toll on your mindset? And no, definitely. When my children were young, I remember we had, Dehradun had just started opening up to colleges from schools. And I was looking after a college as a doctor. And then, suddenly one day
I would be कोई स्कूटर नहीं चलाएगा, you ही नहीं जाएगा, तुम टाइम से घर आना, and you know I would be very worked up, and my children would say कि I love that DIT में फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, and I would, you know, I would declare a young boy of 20, and then that does affect you. You get so कि oh please तुम सड़क पे मत जाना, you know, सड़कों पे ये हो जाता है. Naturally. Because over a period of time you learn to cope up with them little better. Right? Everything takes it. And you feel sad when you look back to that empowered culture of my country. Right. Then you will see this kind of gory things happening to my little girls. 3 साल की बच्ची से हो रहा है, 60 साल की महिला से हो रहा है, पुत्र ने कर दिया है, क्या नहीं हो रहा है. Right. So, Doctor, last but not the least, I would want you to give the viewers, give the people, families, those kind of, one advice from you which can actually help maybe families who are on the verge of separating, maybe children who are looking for an advice, or maybe a distraught mother who's confused or wants to balance her professional life with family. What is that one advice as a mother, as a chairperson, as a social activist? What is that advice you would want to give to the viewers today? Given your best to make it work. Seek professional help and your family support system to look into the causes. Try changing it. But if your professional helps your family and you fail, then walk out. Only then walk out. But make sure that the child is not made the judge or the listening ear for all your pain, because that is what damages it the most. Right. And if both of them are intelligent, many a times they're both intelligent, but there is a self-aham ka takrav hai, so just stay together without interfering. Right. But coexistence is extremely beneficial to a child. Whereas a single parent is definitely better than continuously warring abusive parents. So, family is जहाँ कोई ना खड़ा हो, जो कोई ना एक्सेप्ट करे, वो भी फैमिली है एक ऐसा स्ट्रक्चर हमारा जो एक्सेप्ट कर लेती. सो बिना शर्तों के प्यार दीजिए अपने बच्चों को. उन्हें नंबरों की दौड़ से अलग उनकी अपनी प्रतिभाओं को अपनी कैपेसिटी और उसकी कैपेसिटी के अनुरूप निखारिए. डोंट इम्पोज योर विशेस और अनफुलफिल्ड ड्रीम्स recklessly on your child. Right. Don't compare them. They are all real special individuals. When I say this, I actually, tell us that we have also made mistakes. And then you realize that your parents were guiding you rightly. Chhad de, Punjabi mein, we would say, chhad de, आप पे सीख जाएगा. But then as a new age mother, we were all worked up. ना, ये भी करना है, वो भी कराना है. Let children be children, not mini adults. Don't impose too many aspirations on them. Childhood is a very special time. It needs to be nurtured and enjoyed, not played like a robot. Right. Correct. Thank you so much with your very fabulous and inspiring journey. From today's episode, I'm sure we'll take back home at least being compassionate, being mindful in handling your relationship, and there is no harm in at least practicing being grateful and gratitude towards your family members, towards your elders, and maybe a little bit more respectful if you can be in relationship so that your children are not impacted with your own personal fights. Thank you so much for finding out time and making this episode so special for us. I'm sure the viewers are going to enjoy. And please don't forget to comment. If there is anything that you want to write, please write us up. Thank you. I loved it.